हेलो, सबको मेरा आवाज मिल रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि सब ज्वाइन कर लिया होगा। मुझे ये लोग ज्वाइन करने में बहुत समय लगा दिया ना, बस 18 बच्चे ही अभी तक सोया हुआ है क्या सब के सब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ। 19 ही बच्चे अभी तक ज्वाइन किए, सबके सब सोया हुआ है क्या? इतना लेट से सब ज्वाइन करेगा तो फिर तो क्लास मिस होगा सबका। कल लास्ट के 5 मिनट्स आप लोगों को दिख नहीं रहा था, इसका मतलब वो टॉपिक को आपको फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। कंकरेंसी ऑफ लाइंस को नहीं, कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस को फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। उम्मीद करते तब तक सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए होंगे। अच्छा टाइमिंग है ना, आराम से लिंक से लिखो, जूम मीटिंग ज्वाइन करो। नहीं सब यही करते हो मैक्सिमम। सामने पे नहीं दिख रहा बेटा, 6 से 7:30। अब जितने ज्वाइन कर लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। खैर सोफिक सामने क्यों भाग जाता है? अरे गुड मॉर्निंग सर। चलो स्टार्ट करता हूँ। जितने ज्वाइन किए देखिए उनकी प्रॉब्लम है। चलो हम आते हैं। कल हम बात कर रहे थे कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। ऑलरेडी कल बोला था कि एक बार और रिपीट कर देता हूँ जो लैंग्वेज बोला था। 3 lines are said to be concurrent if they pass through a common point, that is they meet at a point। ठीक है, 3 इक्वेशन है, a1x b1y c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a3x plus b3y plus c3 equal to 0। इक्वेशन 1, 2 and 3। कहने का मतलब है कि 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन जो है और तीसरे 2 लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और तीसरे लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तीसरे लाइन पे वो भी पाया जा रहा है, तो इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 लाइंस बोलेंगे। कल आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 2 इक्वेशन से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। क्लास 10th में ऑलरेडी आप पढ़े होंगे। हम लिखेंगे इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन दिया होता तो xy की वैल्यू निकालते तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट था। यहाँ पे भी हम xy की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 से निकालते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। कल आप लोग बोल रहे थे कि नहीं दिख रहा था, इस बार तो दिखना चाहिए। उम्मीद करते हैं x अपॉन, जब हम x लेते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, इससे कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट से मल्टीपल माइनस ऐसे क्रॉस करके मल्टीपल करके लिखते हैं b1 c2 माइनस b2 c1। क्लास 10 में पढ़ोगे तो याद आ गया होगा।
y upon the cross multiplication method we बोलते हैं C1A2 minus C2A1 equal to 1 upon constant जो है उसको यहाँ यूज नहीं करते डायरेक्ट 1 upon लिखते हैं A1B2 minus A2B1 A1B2 minus A2B1 अब यहाँ से x and y की वैल्यू निकालो इसको इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा B1C2 minus B2C1 upon A1B2 minus A2B1 ये x आएगा अगर इसको इक्वेट करोगे y भी मिल जाएगा y इक्वल टू C1A2 minus C2A1 divided by A1B2 minus A2B1 अब ये x और y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लो ऐसे ही डालेंगे ये दोनों पॉइंट इसमें डालेंगे तो एडजस्ट करना चाहिए ठीक है तो डाल के देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 में तो a3 into x की जगह पे सारा वैल्यू है b1c2 minus b2c1 upon a1b2 minus a2b1 plus b3 into C1A2 minus C2A1 A1B2 minus A2B1 plus C3 equal to 0 इसे सॉल्व करो इसका डिनोमिनेटर सेम है पूरा के एलसीएम लेंगे और सॉल्व कर लेंगे और जो भी एलसीएम लेने पे डिनोमिनेटर में जो टर्म होगा ये उधर जाएगा जीरो हो जाएगा ये छोटी चीजें बार-बार हम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए B1C2 minus B2C1 plus B3C1A2 minus C2A1 plus C3A1B2 minus A2B1 equal to 0 ये ध्यान रखना इसे हम शॉर्ट फॉर्म में जब लिखने की कोशिश करेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में a1 b1 c1 यानी कि इसका जो भी x y कोएफिशिएंट कांस्टेंट है उसके बाद a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू 0 अगर ये चीजें आप भूल गए हो तो ये ध्यान रखना चाहिए ये अगर याद रहेगा तो एक सेकंड में तुम ये टर्म लिख सकते हो ये डिटरमिनेंट्स में है ठीक है डिटरमिनेंट्स नहीं पढ़े उसका सबको ध्यान नहीं होगा हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा पूरा नहीं जल्दी से इसे राइट डाउन करो this is the required condition of frequency required condition of concurrency उम्मीद करते हैं जल्दी से नोट डाउन कर लो हम देखता हूँ कितने बच्चे आ गए अभी भी 5-6 कम है उम्मीद करते ये बातें सबको समझ में आ गया होगा तो बहुत बच्चे तुम लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो सर वो एक्स वाला जरा फ्रॉम इक्वेशन उसके बाद जरा क्या किया ये समझ नहीं आया नहीं सर ये वाला कर नहीं सर उसके ऊपर
ये जो लिखा सो, हाँ सर। अरे ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकाला। अगर इससे समझ नहीं आ रहा है तो देख, ये दो इक्वेशन है ना, a1 a2, इसे क्या लिख सकते हो, एक सेकंड रुको, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। अगर इसको a2 से मल्टीपल करें तो क्या हो जाएगा, a2 a1x a2 b1y प्लस a2 c1 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में a1 से मल्टीपल कर ले तो a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर ले, सब्ट्रैक्ट कर लेगा तो इससे ये कट गया, सब माइनस में आ जाएगा। फिर क्या लिख सकते हो इसे, इस दोनों में y कॉमन लेके a2 b1 माइनस a1 b2, और ये क्या हो गया, इसको उधर इक्वल टू उधर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में, a1 c2 माइनस a2 cy। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे a1 c2 माइनस a2 cy अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2 क्लास 10 में नहीं पढ़े थे, दो लीनियर इक्वेशन से x y की वैल्यू निकला है, एक y की वैल्यू है क्या, ये सेमी तो वैल्यू है। अच्छा तुमको दिख रही है a1 b2 है, ये a1 माइनस कॉमन ले लेना ऊपर और नीचे में और लिख लो ऐसे ही, माइनस कॉमन लेगा तो a2 c1 माइनस a1 c2, यहाँ माइनस कॉमन लगा तो a1 b2 माइनस a2 b1, यही तो वैल्यू आया। जैसे लीनियर इक्वेशन की वैल्यू उसको तो y की वैल्यू निकल के आ गया, ये कोई भी इक्वेशन में डाल दो 1 या 2 x की वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया। जैसे कि यहाँ x की है तो x लिखा ऊपर में और नीचे इसके ऐसे क्रॉस लिखा है, इसको इससे मल्टीपल कर फिर इससे मल्टीपल, तो b1 c2 माइनस b2 c1। अच्छा फिर y वाला टर्म लिखना है तो इसको हटाओ, ठीक है, हम y लिखो और इसके आगे मान लो तो c1 यहाँ पे होता a1 और यहाँ पे a2, तो c1 a2 माइनस c2 a1 और फिर कांस्टेंट के लिए 1 लिखेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे लिख लो और x y की वैल्यू निकाल लो एक सेकंड में। उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा सबको। कारस वास्ते कितना लेट से ज्वाइन करेगा, नहीं सर, अभी ज्वाइन कर लिया। अभी सो के उठा है, मारे दो फैट ना सब दिमाग ठिकाना लगा दे। अभी भी बहुत बच्चे नहीं है, हम सबको आज देख रहा हूं ना। हारे शिव सुंदर दास समझ आवत है, शिव सुंदर दास यस सर। समझ रहे हो, चलो हम इसी रेस करते हैं। यस सर। लेट से आए हो तो उसका करेगा तो सुबह उठ नहीं सकते हैं, पूरी रात सोए रहते हैं। इसमें अल्टरनेट मेथड लिखो, अल्टरनेट मेथड, ये मेथड ज्यादा इजी है। जैसे डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में आ गया तो जानते हो a1 into b2 into c3 minus b3 into c2 ऐसे करके आप लिख सकते हो। देखो अल्टरनेट मेथड क्या कहते हैं, जैसे लाइन तुम्हारा a1 है, फर्स्ट लाइन मान लिया a1x plus b1y plus c1 equal to 0, दूसरा लाइन तो हमें a2x plus b2y plus c2 equal to 0, जो लिखा था c1 को 3 ले लेंगे, a3x plus b3y plus c3 equal to 0, तीन लाइन है। तो कहने का इसका मतलब ये है, ये तीनों कंपोनेंट कब होगा लिखो, 3 lines L1 L2 L3 are concurrent if, या if ये लिख रहा I double L वाला, if and only if कहने का सेंस है, if there exist
constant, if there exists constant lambda 1, lambda 2, lambda 3, not all zero at the same time, so that lambda 1 L1 plus lambda 2 L2 plus lambda 3 L3 equal to 0. या वैसे लिख सकते हैं lambda 1 A1x plus B1y plus C1 plus lambda 2 A2x plus B2y plus C2 plus lambda 3 into A3x plus B3y plus C3. ये पूरा इक्वल टू 0 होना चाहिए। lambda 1 lambda 2 lambda 3 कोएफिशिएंट है, कोई भी और नंबर या कोएफिशिएंट से मल्टीपल तीनों इक्वेशन में करो और तीनों का सम 0 हो गया तो समझो कि 3 लाइंस आर कंकरेंट। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट करो। अरे विज्ञान समझ आ रहा? यस सर। सानिध्या कहाँ तू रहता है? रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है? यस सर। लगता है क्लास में नंदन नहीं है। अरे नंदन हो कि नहीं थे? हूँ सर हूँ। अच्छा तुम हो। ये स्वयं नहीं है। और क्या कहते हैं अनामिका और Yes, sir. झारखंड से समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. हाँ अब एक और किसी ने ज्वाइन किया, देखते हैं कौन है। आयुष नायक, ठीक है बेटा मैथ्स पढ़ ले अच्छे से। भाग्य अरे वो राउतरे नहीं आजकल जो ज्वाइन करी ना, दुबे है कि नहीं मैंने देखता हूँ। अरे दुबे जी समझ आ रहा? Yes, sir. पांडा ब्रदर्स यस सर। चुप नहीं रहने का, पूछने का। चलो क्वेश्चन लिखो, इस कंकरेंसी पे क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। लिख फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the lines if the lines 3x minus 4y minus 13, 3x minus 4y minus 13 equal to 0, 8x minus 11y minus 33, 8x minus 11y minus 33 equal to 0, and 2x minus 3y plus lambda equal to 0. ये लैम्डा की वैल्यू निकालना है जो तीनों लाइन कंकरेंट हो रहा। Find the value of lambda if the lines equal idea 5 x minus 4y minus 13 equal to 0, 8x minus 11y minus 33 equal to 0, and 2x minus 3y equals lambda equal to 0 are concurrent. अभी कौन ज्वाइन किया है? अच्छा शुभम, अभी तुमको नींद खुला है रे? और कौन कौन ज्वाइन किया है अभी देखता हूँ। मैथ वाला फोन में घुस के उसको
मारने का मन करेगा मुझे। एकलव्य, अरे खा खा के सोया रहता, अभी तुमको फुर्सत मिला है। एलिजाबेथ कहाँ गायब रहती बेटा? तुम्हारा नंबर नहीं लगता है? ये सब इतना लेट से ज्वाइन कर रही है ना। आकाश भी लेट से ज्वाइन किया है ना रे। कोई ना, कोरोना के बाद तो मिलोगे ना, हिसाब पूरा लिया जाएगा। बनाना किसी से लेमडा की वैल्यू निकाल दो, जिससे तीनों लाइन कंकरेंट है। ठीक जल्दी बताओ, असमानी का पात्र हुआ है। कर रही हूँ सर। सर -7 आ रहा है। -7 आ रहा है। गुड। अंदाज हुआ तुमसे? सर आधा क्या हूँ सर? क्या आधा में सर। आधा? अनामिका सर करना। हो गया? प्रकाश दास नहीं हुआ सर। सतप्रकाश, ये दोनों से एक वक्त रैंडम निकाल और सब्स्टिट्यूट कर, लैम्डा की वैल्यू आ गया, हो गया आंसर। अभी ने बताया दोनों मेथड। नहीं तो सिर्फ डिटरमिनेंट्स निकालो, डिटरमिनेंट्स निकालोगे वहां डाल दो, लैम्डा की वैल्यू आ गया। तीनों इक्वल टू 0 चाहिए था ना। अगर ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसमें डालेंगे, वो भी लाइन तो उसी पॉइंट से होकर गुजर रहा है ना, तभी तो कंकरेंट है। तीन लाइन अगर एक पॉइंट से होकर गुजरेगा, कितना बार आप लोगों को बताऊं, फिर भी थोड़ा भी दिमाग मत लगाना। गुड, खर्च हो जाएगा। अपना ब्रेन यूज करोगे बिल्कुल, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। ब्रेन बचा के रखना, अभी मत यूज कर लेना, एग्जाम के एकदम समय में ही यूज करना। अभी यूज करोगे तो खर्च हो जाएगा ना। सौम्या समझ में आ रही है? साई सर यस सर। और दोम सर बुझिला? अरे अचारी नहीं दिख रही, अचारी है कि नहीं रे? तुमको समझ आया? हाँ है। देखो एक्स वाई की वैल्यू ध्यान से निकाल ले, इसमें डाल दे। अभी क्या बोला एक्स वाई की वैल्यू निकालने का तरीका, या एक्स वाई सॉल्व कर ले जैसे करना आता है क्लास 10 की थ्योरी, तो तरीका करें x अपॉन -4 into -33 क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 33 into 4 132, माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ तो माइनस पहले से लगा हुआ है, मल्टीपल होने पर प्लस हो जाएगा। तो -11 into -13 क्या होगा? 143 इक्वल टू y अपॉन -13 into 8 104 -104 -33 into 3 क्या होगा? -99, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन -33 माइनस, फिर -82 वाले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 82 बोल सकते हैं 32। तो ये x अपॉन ये क्या हो गया? 11 -11 और ये -5 इक्वल टू ये 1 अपॉन -1 यानी -1। इससे इक्वल करो
तो x इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू 5। कैसे भी सॉल्व करें, यही वैल्यू आना है, इसको उठा के वहां डाल दें इक्वेशन 3 में। तो 2 into 11 minus 3 into 5 plus lambda equal to 0। 22 minus 15 plus lambda equal to 0। ये क्या आ गया, 7 आ गया। 7 plus lambda equal to 0। lambda equal to -7। आठ ना खोल के सोचने की कोशिश कर, सो के उठ के तुरंत ज्वाइन कर लेते हो, तब तक सोए रहते हो कि पूरा नहीं, जब तक कंप्लीट ना हो तब तक क्लास नहीं करना, नहीं रे एकलव्या? अभी भी 2-3 गायब है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिसे ना समझ में आया एक बार पूछ लें। सर आज के बाद फिर ये चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे, सुन लो। अब मिलोगे तब रिवीजन में, आज से वाइंड अप करना है नहीं। आओ लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इमेज ऑफ अ पॉइंट, हेडिंग डालना, image of a point with respect to the line, image of the point image of a point with respect to the line, with respect to the line here. देखो लाइन को हम ये एज्यूम करेंगे और उसके सामने पॉइंट है, तो जस्ट उसका इमेज कहाँ बनेगा। एक बार और इस तरह का थोड़ा सा बताया था कि वो तो परपेंडिकुलर बनेगा, और परपेंडिकुलर आप निकाल लेते थे स्लाइड, और छोटा सा तरीका हम ऑलरेडी आपको बताया था कि जितने लेंथ पे वो है उस लेंथ पे जाके और एक्स वाई वैल्यू निकाल लो कोऑर्डिनेट। जो थोड़ा और दूसरे तरीके से देखते हैं। हेडिंग डाल दिए तो लिखो ध्यान रखना, बहुत जल्दी क्विक से सॉल्व कर लोगे अगर मैं बताना चाह रहा हूं। तो पहले इसको लैंग्वेज में थोड़ा लिख ले। लेट द इमेज ऑफ ए, लेट द इमेज ऑफ ए, ये लाइन ले जैसे इक्वेशन है a + by + c = 0। मान ले कहीं तो पॉइंट ए है, x1, y1, इसका इमेज यहाँ पे पॉइंट बी है, x2, y2, यहाँ पे पॉइंट सी है जिसे हम x3, y3 मान लें। ठीक है, तो लिख लेट द इमेज ऑफ x1, y1 with respect to the line, with respect to the line mirror ax plus by plus c equal to 0. b x2, y2, b coordinate b x2, y2, then it is given by देखो x2 minus x1 upon a equal to y2 minus y1 upon b equal to minus 2 into ax1 plus by1 plus c upon
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर x1 y1 दिया हुआ x2 y2 निकालना है, ठीक है, जस्ट इसका इमेज बन रहा है और ये लाइन जो है मिरर है, तो क्या किया x2 minus x1, तो जो निकाला उसको पहले लिखो x2 minus x1 अपॉन a, इस लाइन का जो x का कोएफिशिएंट है अपॉन a, y2 minus y1 और y का जो कोएफिशिएंट है जो मिरर की तरफ रिएक्ट कर रहा है, जो लाइन का इक्वेशन, उसका कोएफिशिएंट y का अपॉन b इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट गिवन था ना, ये x1 y1, इसे लाइन की इक्वेशन में डाल दो, x की जगह पे x1 डाला, y की जगह पे y1 डाला, मल्टीप्लाई 2 से करना है, -2 से, डिवाइडेड अपॉन जो इसका कोएफिशिएंट था a और b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऐसे करोगे, इसको इक्वेट करोगे, x2 की वैल्यू मिल जाएगा, इसको इक्वेट करोगे, y2 की वैल्यू मिल जाएगा। यही तो मेरा इमेज का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसमें एक लाइन और आगे जोड़ो, क्योंकि अगर ये ना दिया हो, ये कोऑर्डिनेट ढूंढना हो x3 और y3, उसके बारे में एक लाइन लिखो। इतना नोट कर लिया सबके सब? यस सर। अब मैं प्रोफेस का बताता हूँ, पर इतना नोट कर लो। आगे लिखो, ऑल्सो लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, also let the foot of perpendicular from the point a x1 comma y1, मैं x3 y3 के कोऑर्डिनेट निकालने को बताऊंगा कैसे निकालेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर करने का मतलब उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रहा है, पर्टिकुलर लाइन, उसी को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी वो पैरों पे आप जब भी खड़े होते हो तो परपेंडिकुलर ही खड़े होते हो, ना ऐसे झुक के ना पीछे ऐसे झुक के खड़े होते हो, ना ऐसे झुक के ना ऐसे झुक, डांस नहीं करना है ना, खड़े होना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर करने का मतलब तो हम ऑलवेज 90 डिग्री पे खड़े होते हैं, हाँ कुछ ऐसे झुक जाता है उसकी बात है, मैं क्या करूँ, तो बूढ़े होने पे आदमी झुकते हैं ना। तो लिख, also let the foot of perpendicular from the point a x1 comma y1 on the line ax plus by plus c b c x3 comma y3, b c x3 comma y3, which is given by, अब हम x3 y3 निकालना है तो देखिए ध्यान दो, x3 minus x1 upon a equal to y3 minus y1 upon b। अब यहाँ पे क्योंकि ये लेफ्ट कितना था, डबल से -2 से मल्टीपल करा था, यहाँ पे -2 से नहीं मल्टीपल होगा, सिर्फ माइनस है, माइनस x1 plus by1 plus c upon a square plus b square। हो गया? सबने नोट कर लिया? यस सर। बोलना, एक दो बच्चे भी बोल, हाँ या ना। देखो इसे प्रूफ करते हैं, बहुत इजी है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, x प्लस by प्लस c का। बोलो स्लोप क्या होगा कोई? इस लाइन का a प्लस by प्लस c का स्लोप बताओ जल्दी से, सबके सब चुप हो, स्लोप का समझ लिया ना, स्लोप क्या होगा?
सर ए। स्लोप ए होगा रे। तुमको इस लाइन का स्लोप ए दिख रहा है? और कोई बताओ जल्दी। चल रहे हर्षिता बताओ तो इसका स्लोप क्या होगा? अनुराग बताओ स्लोप क्या होगा इसका? एकलव्य बताओ क्या होगा इसका स्लोप? दुबे बताओ इसका स्लोप क्या होगा? सौम्या बताओ स्लोप क्या होगा? अभिप्सा बताओ बेटा स्लोप क्या होगा इसमें? प्रकाश स्लोप क्या होगा? इतना देर के बाद तुमसे सही बोला गया लड़की। अस्मानिका स्लोप क्या होगा बेटा बताओ? मतलब सिर्फ एक बच्चे को पता है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। 10 डेज में सब के सब गायब। ऑटोमेटिक डिलीट बटन लगा रखे हो क्या दिमाग में? अरे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो? तुम स्लोप नहीं बता सकते हो इसे? तुम्हारे पास लाइन का इक्वेशन है एक प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। नंदन a by b होगा, इसका स्लोप a by b होगा। कि माइनस a by b होगा रे? by इक्वल टू सबको टर्म को दे देगा माइनस x माइनस c, तो y इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई, और x के साथ जो मल्टीपल होता है वही तो स्लोप होता है। y इक्वल टू mx प्लस c। मतलब पढ़ना है ही नहीं, एक दिन में मत पढ़, झूठ मूठ के खाली। तो इतने बच्चों से नाम लिया, पूछा, किसी के मुझे स्लोप नहीं समझ रहा है, कैसे स्लोप पढ़ूं? क्या है स्लाइड का स्लोप क्या हो गया? अब ये बताओ, ये ए और बी के बीच पॉइंट ए और बी से इस लाइन का स्लोप क्या होगा? दो पॉइंट गिवन है, कैसे स्लोप निकालोगे? सर y2 minus y1 by x2 minus। हाँ, स्लोप लाइन ए बी y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। दोनों स्लोप का मल्टीपल करोगे तो क्या होगा? ये स्लोप और इसके स्लोप, ए बी के स्लोप और इस लाइन के स्लोप का मल्टीपल क्या होगा? कोई बोलोगे? परपेंडिकुलर है, दो लाइन जब परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। सब मिल रहे हो ना? इस दोनों का प्रोडक्ट -1 यानी माइनस ए बाई बी इंटू y2 minus y1 upon x2 minus x1 इक्वल टू -1। छोटी छोटी बातें भी अगर आप लोग को याद नहीं रहेगा तो क्या में गुस्सा नहीं आएगा? सामने वाला तो सर फोड़ देते सबके। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट। देखिए इसे लिखते हैं y2 minus y1 अपॉन, ये b को यहां पे रख दो और x2 minus x1 उधर ले लो, मल्टीपल करो तो x2 minus x1 अपॉन a। इसे लिख सकते हो क्योंकि x इधर 1 है, वहां से इसको मल्टीपल करोगे तो मिल गया x minus x1, और ये यहां पे मल्टीपल है तो मिलेगा, तो डिवाइड करोगे, इस फॉर्मेट में ला सकते हो। जब ये लेगा तो इसे यूज करो, डेट इज इक्वल टू a।
देख हम इसको इक्वेट करते हैं। तो अगर x2 माइनस x1 इक्वल टू a के हो गया, दोनों तरफ इसको हम a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या, तो यहां पर लिख सकते हैं a से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, तो ax2 माइनस ax1 इक्वल टू a स्क्वायर के। उसी तरह से इसको कैसे इक्वेट करो, तो y2 माइनस y1 इक्वल टू b इंटू k। फिर इसको b से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड्स, तो by2 माइनस by1 इक्वल टू b स्क्वायर k। इसे इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। ठीक है, पहले चलो इतना नोट करो, फिर हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। हो गया सबका नोट? यस सर। इधर का पोर्शन को इरेज कर दो। अब ध्यान दो, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 और 2। ठीक है बेटा, तो देख ऐड कर लेते हैं। तो ये आया ax2 माइनस ax1 प्लस by2 माइनस by1 इक्वल टू, उधर ऐड करोगे a स्क्वायर k प्लस b स्क्वायर k। ध्यान दो, हम a2 और b1 को एक साथ ले लेते हैं, ax2 प्लस by2। ठीक है बेटा, इसको एक साथ लिया, इसमें हम प्लस 3 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो माइनस है तो माइनस को हम ले लेते हैं, ax1 प्लस by1, इसमें भी प्लस 3 ऐड कर लेते हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये पॉजिटिव सी माइनस से मल्टीपल होगा, माइनस ए सी, तो माइनस नहीं होगा तो प्लस से माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ा ना? सबको ये बात समझ में आ रहा है? इसमें इस लाइन में ही, इस स्टेप में ही प्लस सी और माइनस सी ऐड करेंगे। प्लस सी को पॉजिटिव वालों के साथ रखा, माइनस सी को नेगेटिव वालों के साथ रखा। माइनस कॉमन ले लिया इसलिए प्लस सी इक्वल टू, यहां से k कॉमन ले लो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, ये a और b पॉइंट है, a का इमेज b है, तो c का कोऑर्डिनेट, अब ये x3 y3 के लिए भूल जाओ, परपेंडिकुलर के लिए माना था। अब c का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये मिड पॉइंट होगा ए बी के बीच c। जितने डिस्टेंस पे ए है लाइन से, उतने डिस्टेंस पे बी का इमेज बन रहा है ए का। तो ध्यान दो, तो c कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हो? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सारे को समझ आ रहा है? Yes. अरे कोई तो बोल। यस सर। अगर ये मिड पॉइंट जो है पॉइंट सी, ये लाइन में, इस लाइन पे ही तो है सी,
तो ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन के लाइन इक्वेशन में सैटिस्फाई करेगा। तो हम x की जगह पे ये वैल्यू और y की जगह पे ये वैल्यू आप डाल सकते हैं इक्वेशन में। a x की जगह पे क्या डाल सकते हैं, x1 plus x2/2 plus b into y की जगह पे y1 plus y2/2 plus c equal to 0। इसे सॉल्व कर तो ध्यान दें ax1 plus ax2 plus by1 plus by2 plus 2c equal to 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 होता है इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम c को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दो ax1 plus by1 plus c एक साथ लिख लो plus ax2 plus by2 plus c एक साथ लिख लो इक्वल टू 0। 2c को एक को x1 y1 के साथ रख दिया, एक को x2 y2 के साथ रख दिया। और यहाँ से ध्यान दें ax1 plus by1 plus c equal to minus ax2 plus by2 plus c equal to 0 equal to 0 sorry this equal to minus this। तो इसके जगह पे माइनस ax1 plus by1 plus c लिख सकते हो। इसे इक्वेशन 2 ले लो फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम इसकी वैल्यू लिखना है तो ये माइनस हम इधर भी लगा सकते हैं, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसके जगह पे क्या यूज कर सकते हो माइनस ax1 plus by1 plus c minus ax1 plus by1 plus c equal to k into a square plus b square है। अब ये -2 हो गया, -2 into ax1 plus by1 plus c equal to k into a square plus b square। इनको जल्दी से फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट कीजिए आप लोग, ऐसे तो आदत है ही तुम लोगों को, हम इधर लिख रहे हैं और उधर आप लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हो गया? सबने नोट कर लिया, आगे बढ़े इसमें? यस सर। नो सर, नो सर। सर एक मिनट रुके। Yes, sir. इसके बाद ये सभी का क्लास खत्म हो गया है। हो गया सर। हो गया? देखो मैं एक स्टेप ऊपर से रेज करता हूँ यहाँ से। देख अब यहाँ से k की वैल्यू क्या लिख सकते हो बेटा? k इक्वल टू
minus 2x1 plus by1 plus c upon a square plus b square। मुझे k का ये वैल्यू आ गया, ये k की वैल्यू आ गया तो यहाँ उठा के डाल दो, यही डालना है ना k की वैल्यू, minus 2 into x1 plus by1 plus c। तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, मेरे जैसे मत कर लेना, तो बोर्ड पे लिखना है। आ गया? यही प्रूफ करना था ना, ये हो गया। इक्वल टू हमने के यहाँ पे जूम किया था और के सर राइट पोर्शन तो दिख नहीं रहा। डाल दिया। वेट करते सर, समझ दिख आ नहीं गया? रहा। जल्दी से नोट करो, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में खत्म करके हमेशा के लिए करो टॉपिक, चैप्टर, सॉरी टॉपिक बोल गया। हो गया? सर राइट वाला पोर्शन दिख नहीं रहा। जल्दी करो, अगला हेडिंग डालो, फैमिली ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सोचो कि 4 कॉपी भी पी है, सारा घर का काम भी कर ले, पर भी सही है, थोड़ा सो भी है, कितना तो सब लेट भी पड़ रहा है, सो के ज्वाइन करके भी सो गया, जैसा भी होंगे। लिख फैमिली ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हटा दो, एक थोड़ी है, बहुत सारी लाइंस है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन 2 लाइन ले लिया, L1 ये x, ये 1x plus b1y plus c1 equal to 0, another line ले लिया L2 a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये 2 ही लाइन पे हम बात कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लाइन समझ के गुजर रहा है यहाँ से, जितने इसके लाइन गुजर रहा है, इसके फैमिली में जितना लाइन हो 5, 10, 20, 50, ठीक है। फैमिली का तो बहुत सारे एग्जांपल आपको दे रखे हैं, अब ज्यादा एग्जांपल अभी तो नहीं बताऊंगा। देख लिखा है, let L1 A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and L2 A2x plus B2y plus C2 equal to 0। फिगर बना लेना, नोट कर लिया सबके सब? सर राइट साइड नहीं दिख रहा थोड़ा। राइट साइड नहीं दिख रहा है? नो सर। अरे लिखा क्या है, अब दिख रहा? अब और थोड़ा सा कर दीजिए उधर। और थोड़ा सर। अब यस सर। और a2x plus b2y plus c2 equal to 0 लिखा है, इधर लिखा है a1x plus b1y plus c1 equal to 0। तो सुन भी लिया क्या, काम भी रखा है, बहुत ठंड है क्या, काम करा रखे हो क्या? ठीक है, let L1 a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and L2 a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then the general equation of any straight line, passing through the point of intersection, of lines
passing through the point of intersection of lines L1 and L2. L1 and L2 is given by L1 plus lambda L2 equal to 0. या लिखेंगे A1x plus B1y plus C1 plus lambda into A2x plus B2y plus C2 equal to 0. Where lambda belongs to R. So lambda belongs to R. These lines form a family of straight lines. So this line. These lines form a family of straight lines. These lines form a family of straight lines from a point P. यहाँ पे point P मानो from a point P. इस तरह से स्ट्रेट लाइन टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया. अभी जो दो टॉपिक बताए इससे क्वेश्चंस लेना है, तो जिस दिन इवनिंग क्लासेस होगा उस दिन इस पे क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे. सौम्या, प्रज्ञा, अमृतुंजय. सौम्या स्वयं, अरे अभी क्लास ज्वाइन कर रही है बेटा, बहुत सही है, वेरी गुड. मोनालिसा राउत रे, मैं छोड़ दी, वेरी गुड. चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू सर. थैंक यू सर. और चैप्टर लेके आते हैं, और हो सकता है कि मैं थैंक यू सर. क्या बोलो. थैंक यू सर. चलो सर. ओके बेटा, ओके बाय. बाय सर. Bye, sir. गुड मॉर्निंग सर. Good morning, sir. Good morning, sir.
चलो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग पहले मुझे एक बात, अभिज्ञा प्रेजेंट है क्या? अभिज्ञा अभिजीत, Yes, sir. अभिलिप्सा, अविनाश, Yes, sir. Present, sir. ओके, अध्यासा, अध्यासा दुबे, Present, sir. अध्यासा सिंह, आकाश, अखिलेश पंडा, अनामिका, अनामिका एब्सेंट है, अनुराग, Yes, sir. डेविड, एकलव्य, बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं, लेकिन ये 45 दिख रहे हैं, रिमेनिंग 15। ये सारे लोग जिनका मैंने कॉल किया है, ये मेरे कॉलिंग में आएंगे और मैं इनको कॉल करने वाला हूँ। ये सारे लोग जिनका मैंने नाम दिया है, मैं कॉल करने वाला हूँ। तो अच्छे से होमवर्क और क्या क्या के बारे में पूछूंगा। आज मैं असाइनमेंट भी दूंगा। चलो ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, टुडे टॉपिक इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। Velocity of center of mass. Velocity of center of mass. Okay. Good morning. टाइम से ज्वाइन करो, है ना? इतना ज्यादा लेट ना करें, टाइम से आना चाहिए क्लास में। क्लास टाइम से अटेंड करो, क्योंकि क्लास का पीरियड बहुत छोटा है और ऑनलाइन में पीरियड और भी छोटा फील होता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आज हम स्टडी करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम क्या जानते हैं? m1 x1 m2 x2 बाई m1 प्लस m। और बॉडी होंगे तो और भी हम ऐड करते चले जाएंगे, बट ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर x कोऑर्डिनेट। x सेंटर ऑफ मास ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। और y सेंटर ऑफ मास भी हम ऐसा लिख सकते हैं, y सेंटर ऑफ मास भी हम लिख सकते हैं m1 y1 m2 y2 बाई m1 प्लस m2। ये हमने स्टडी कर रखा है कि x सेंटर ऑफ मास ऐसा होगा और y सेंटर ऑफ मास ऐसा। ओके, इतना हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। चलो ठीक है, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना? डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to time. Differentiate both sides with respect to time. Differentiate both sides with respect to time. Differentiate both sides with respect to time. टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx by dt इक्वल टू m1 dx1 by dt, m2 dx2 by dt अपॉन m1 प्लस m2। मास को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है, और इधर dy by dt इक्वल टू m1 dy1 by dt प्लस m2 dy2 by dt by m1 प्लस m। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? v, दिस इज सेंटर ऑफ मास, देन vcm, लेकिन किस एक्सिस के अलोंग? x एक्सिस के अलोंग। क्या होगा? m1 v1 m2
V2 along X by M1 plus M2. This is velocity of center of mass along X axis. Similarly, V center of mass along Y axis equal to M1 V1 M2 V2. ये Y के along है, then M1 plus M2. This is V center of mass, velocity of center of mass along Y axis. ओके, तो इसको नोट करेंगे सभी लोग, और किसी को भी डाउट है तो पूछेंगे। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि dx by dt इज वेलोसिटी। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर, वो जो v1x लिखा है वो वेलोसिटी ऑफ वो x मास x का है। मास x नहीं, अलोंग x। ये वाला ना, ये इसको बात बोल रहे हैं ना, अलोंग x का वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मास m1 अलोंग x एक्सिस। मैं लिख देता हूं v1x। v1x means velocity of m1, v1x means velocity of m1 along x axis, okay, along x axis। v1x means velocity of m1 along x axis, v2x means velocity of m2 along x axis। ओके, समझ में आया क्या? यस सर। ओके, तो इसको नोट करो। अगर हमने x को रिप्लेस किया y से, x को हम रिप्लेस कर देंगे y से, तो वेलोसिटी हो जाएगा y एक्सिस के अलोंग, किसका, m1 का। ठीक है, और अगर मैं नीचे लिखूं तो दिखाई नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने इतना ही लिख के छोड़ दिया। किसी को ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, मजा आ रहा है ना घर में रहने से? यस सर। सर, ऑफलाइन क्लास में आपने ये वाला डिराइव नहीं किया था। डायरेक्ट लिख दिया होगा, हो सकता है। यस सर। लेकिन अभी तो कर दिया, नोट कर लो। समझ में आया ना? यस सर। ओके, अगर हमने इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लिखा होता ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेरिवेशन तो कोई पूछने वाला नहीं है। फिर भी नोट कर लो। बहुत 5 लोग एब्सेंट हैं इसमें। एब्सेंट ना हो रहे, घर पे रहकर पढ़ना है तो कितना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभिलिप्सा पाल प्रेजेंट है, अभिलिप्सा पाल। ओके, अभिलिप्सा जिज्ञासा है तो प्रेजेंट होंगे ही। चलो ठीक है, तो चलो मैं मिटा रहा हूँ, है ना? नोट कर लिया ना सभी लोगों ने?
अगर हमने इस x को y से रिप्लेस कर दिया, अगर हमने इस x को y से रिप्लेस कर दिया है, अगर हमने x को y से रिप्लेस किया है ना, तो बस यहाँ पे y एक्सिस करना रहेगा और कुछ नहीं। ओके, सिर्फ हमने x जहां जहां था y लिख दिया है और कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, हमने x को y लिखा है बस। चलो मिटा रहा हूं मैं। डाउट क्लासेस में अभी तक फिजिक्स में जो भी पढ़े और उसको अगर हम रिपीट करना चाहते हैं तो मुझे बता देना, मैं उसी टॉपिक को रिपीट करूंगा। अप टू 7 चैप्टर जो भी पढ़े हैं, और अगर उसमें किसी को डाउट है कहीं पर तो डाउट क्लासेस में बोल सकते हैं, मैं उसको रिपीट करूंगा। ठीक है, तो चलो अब आगे, हाँ अब आगे चलते। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि वेलोसिटी ऑफ 2 kg block, velocity of 2 kg block, velocity of 2 kg block is vertically upward 4 meter per second. Velocity of 2 kg block is 4 meter per second vertically upward. Velocity of 4 kg block is 2 meter per second. Okay, velocity of 3 kg block is along this line 5 meter per second at an angle 37 with horizontal. Okay, at an angle 37 with horizontal. And velocity of 5 kg block is along this line at an angle 53 with horizontal, at an angle 53 degree with horizontal by 10 meter per second. Okay, calculate velocity of center of mass, calculate VCM, calculate VCM, calculate VCM. इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, तो कैलकुलेट VCM। सर हाँ सर वो 37 डिग्री का सर मास कितना है सर? 3 kg ना? 3 kg। यस सर। नंदन राहुल प्रेजेंट हो रहा? Yes, sir. ओके। आदित्य, विश्वजीत का तो आवाज आ रहा था। आदित्य? यस सर, यस सर। ओके, तुम्हें मैंने जो बोला है याद है ना? यस सर, पढ़ रहे हो ना ढंग से? यस सर। हाँ, सिर्फ 8 मंथ ही है। 8 मंथ में हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। सारे स्टूडेंट अभी से अगर 8 महीने मेहनत कर लें तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। याद रखना, अगर कोरोना हुआ तो लॉस है तो फायदा भी है। फायदा ये है कि पेपर इजी आएगा, कंफर्म। फायदा ये है कि पेपर इजी आएगा। लॉस ये है कि फिजिकल क्लासेस थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं, लेकिन फायदा ये है कि पेपर इजी है। तो जो बच्चा थोड़ा सीरियसली पढ़ लेगा तो उसको फायदा ज्यादा दिखेगा लॉस से, क्योंकि पेपर इजी आ गया तो फिर क्या प्रॉब्लम।
और इसी में बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। बहुत सारे अभी देख लो, क्लास में सारे प्रेजेंट होते थे, अभी देख लो 55 में मैं भी हूँ, मतलब ओनली 54 स्टूडेंट है इसके अंदर, तो 6 स्टूडेंट नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये तो हम लोगों का है, बहुत सारे ऑल इंडिया में ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ नहीं रहे होंगे, ऑनलाइन में मस्ती कर रहे होंगे, तो कंपटीशन कम हो जाएगा, तो आराम से क्वालिफाई कर सकते। चलो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं तो सबसे पहले ना वी एक्स, वी सेंटर ऑफ मास फाइंड करो अलोंग एक्स एक्सिस। कितने बॉडी है? 4 बॉडी है। तो क्या लिखेंगे? m1 v1 x, m2 v2 x, m3 v3 x and m4 v4 x by m1 m2 m3 and m4। इस फॉर्मूले में सेट करना है। याद रखो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ही कंसीडर करना है, अदर एक्सिस में नहीं, क्योंकि हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? VCM। अलोंग एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे? ओके, सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया है, सभी लोग अच्छे से देखो। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? तो अगर हमने 2 kg ब्लॉक लिया है तो इसका कुछ भी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस इसका वेलोसिटी 0 है। प्लस 4 kg कंसीडर करेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस इसका वेलोसिटी 2 है। अगर हमने 3 kg कंसीडर किया तो अलोंग एक्स एक्सिस इसका एक कंपोनेंट होगा, इस 5 का एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा 5 cos 37, बट नेगेटिव में 5 cos 37, 5 cos 37 डिग्री इन नेगेटिव साइड। ओके, 5 cos 37 डिग्री इन नेगेटिव साइड, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, चलो ये आ गया, हम लोग को समझ में आ गया ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा। प्लस अगर हमने 5 kg को लिया तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा 10 cos 53, 10 cos 53, 10 cos 53, 10 cos 53 डिग्री। मतलब अगर हमने 5 kg ब्लॉक लिया तो लिखना होगा 10 cos 53 डिग्री बाय 2 + 4 + 3 + 5। नोट करो सभी लोग। फर्स्ट है 2 × 0, सेकंड है 4 × 2, थर्ड है 3 × in the bracket -5 cos 37 and last one 5 into 10 cos 53, 10 cos 53 upon 2 + 4 + 3 + 5। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सभी लोगों को कैलकुलेशन आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। 2 × 0 0 हो जाएगा, तो 0 + 8, यहाँ पे 4 × 2 8 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 3 × 5 53 या 3 × 5 ही रहने दो, क्योंकि cos 37 4/5 होगा तो 5 कैंसिल कर देंगे। प्लस 5 × 10 × cos 53, cos 53 होता है 3/5 अपॉन 14। ओके, तो 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, क्या हो गया यहाँ पे 8 - 12 + 30/14 इक्वल टू, किसी को प्रॉब्लम है क्या? और थोड़ा ऊपर लिख दूं, नोट करो पहले।
ये नोट करो, कैलकुलेशन नेक्स्ट पॉइंट तो खुद भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने Vx कैलकुलेट किया है, इस टाइप से हम लोगों ने Vx कैलकुलेट किया है ना। है ना। 26/14 आंसर इज 26/14 मींस 13/7। तो ये आ जाएगा 13/7 मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, 13/7। सही है ना, देख लो, चेक कर लो। थर्टी नाइन तो नहीं आएगा। 39 आ रहा है क्या किसी को? सर वाई का, सर वाई का। अच्छा, वाई का, वाई तो का y का 39/14। ओके ओके, पॉसिबल है। तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक्स हो गया, वाई भी लोगों ने कर लिया है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए मैं बात करूं कि बस यहाँ पे एक्स को वाई से रिप्लेस करना है और कुछ नहीं। यहाँ जहां जहां एक्स दिख रहा है वाई कर दो। ये ऐसा आ गया फॉर्मूला। अब हमें वैल्यू पुट करना है VCM फाइंड करने के लिए। क्या वैल्यू पुट करेंगे? M1 अगर हमने 2 लिया है तो y कितना है? 4। चलो, अगर हमने 4 kg को लिया तो y कितना है? 0, क्योंकि जो भी वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस है इसका 4 kg का कोई भी पार्ट अलोंग y नहीं है, मींस अलोंग y 0। प्लस नहीं, प्लस 3 into 1 component of velocity of 5 meter per second is -5 sin 37 degree. Okay, and next point, plus 5 into 10 sin 53 degree by 2 plus 4 plus 3 plus 5. ओके, तो ये हमने लिखा है। अब आगे लिख रहा हूं कि VCM इक्वल टू 4 into 2 8 plus 0 plus minus minus plus minus minus कितना हो जाएगा? 3 into 5 cos 37 is 3/5, cos 37 3/5 होगा, cos 37 3/5 plus 5 into 10 and cos sin 53 4/5 by 14। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग आगे? 8, ये तो 5 कैंसिल, -9 प्लस 50 नहीं, ये 5 कैंसिल प्लस 40। तो चलो अपॉन 40, तो बिल्कुल आ गया ये 39/14, बिल्कुल राइट आंसर। दिस इज VCM अलोंग y। ठीक है, तो अलोंग x अलोंग y दोनों हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, अलोंग y एक्सिस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अलोंग x क्या है, अलोंग y क्या है, फाइंड कर लिया। तो जो नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो होगा Vx, VCM x स्क्वायर प्लस VCM y स्क्वायर अंडर रूट
तो VCM is 13/7 and this is 39/14. ओके, ऐसे तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 13/7 स्क्वायर को जब हम बाहर लेंगे नहीं पता चलेगा, वापस लिख देता हूं यहाँ पे 13/7 होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 30 into 3 तो 39 हो जाएगा और 7 into 2 इसको स्क्वायर कर दिया हमने, ये अंडर रूट आ गया। अब आगे का कैलकुलेशन खुद भी कर सकते, बट फिर भी मैं कर देता हूं कि यहाँ भी 13/7 है, यहाँ भी 13/7 है, तो हमने 13/7 को बाहर निकाला, तो 13/7 स्क्वायर को बाहर जब निकालेंगे तो आएगा ओनली 13/7, क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। बचा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर बचा है, तो 13/7 1 प्लस 9/4 13/7 into 13/4 13/4 मतलब अंडर रूट 13/2। दिस इज आंसर। आंसर कितना आ गया 13 अंडर रूट 13/14। दिस इज VCM। समझ में आया सबको? यस सर। तो नोट कर लेंगे। तो ये था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम हेडिंग लेंगे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट हेडिंग इज ACM। अभी तक हमने BCM फाइंड किया था, अब हम लोगों ने ACM फाइंड करना शुरू किया है। अब हम लोग ACM स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने VCM पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ACM। ACM बारिश हो रही है तुम लोगों की तरफ? यस सर। जी सर। यस सर। नो सर, बहुत जोर सर। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर इधर। कुछ एरिया में नहीं हो रहा है, इधर धूप हो रही रहा है। है इधर। चलो ठीक है, तो अब हमारा हेडिंग है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जैसा ट्रीटमेंट हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के साथ किया है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के साथ सेम ट्रीटमेंट करेंगे, सेम 100%। हाँ, क्वांटिटी अलग अलग है बट ट्रीटमेंट सेम। तो अभी अभी हमने पढ़ा है V सेंटर ऑफ मास। इसमें हमने पढ़ा कि अलोंग एक्स क्या होगा M1 V1 x M2 V2 x by M1 प्लस M2। हमने y के लिए भी पढ़ा है कि VCM along y equal to M1 V1 y M2 V2 y by M1 प्लस M2। हमने ऐसा पढ़ा है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। डिफरेंशिएट both side. Differentiate both side with respect to time. Differentiate both side with respect to time. Differentiate both side with respect to time. Differentiate both side with respect to. तो अगर हम दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट,
तो क्या होगा, m2 dv2 x by dt प्लस m2। सिर्फ वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि मास को कांस्टेंट की। ओके, तो m1 dv1y by dt प्लस m2 dv2y by dt by m1 प्लस m। ओके, ये आ गया। अब इसको लिख सकते हो ACM इक्वल टू व्हाट, m1 a1 along x, m2 a2 along x by m1 प्लस m2। यहाँ क्या लिख सकते हैं, ACM but along y equal to m1 a1 along y, m2 a2 along y by m1 प्लस m। नोट करो इसको, सभी लोग इसको नोट करेंगे। आज सेंटर ऑफ मास का लास्ट डे है, आज फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे, एक न्यू टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे कल, जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन इजी है, हार्ड नहीं है। सेंटर ऑफ मास का अच्छे से रिवीजन कर लेना। हम अगर टेस्ट लेंगे, कमिंग टेस्ट जो भी आएगा वो सेंटर ऑफ मास, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी टेस्ट होगा वो सेंटर ऑफ मास का होगा। ओके, तो सभी लोग सेंटर ऑफ मास को अच्छे से रिवीजन लेंगे। फिर भी हमने 2 बार पढ़ ली, हमको लगता है कि 3 टाइम्स भी पढ़ लिए हैं कुछ लोग, तो फिर भी अगर डाउट है तो ये नहीं सोचेंगे कि हमने 3 टाइम्स पढ़ लिया अब नहीं पूछेंगे। डाउट है तो डाउट क्लासेस में पूछेंगे ही, जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हम छोड़ेंगे। ये मोटिव लेके चलना। तो मिटा दें इसको, चलो मिटा रहा हूं। सर लास्ट वाला। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा लास्ट लाइन। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए। आज के टाइम में डेरिवेशन याद नहीं है तो चलेगा, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। आज जो हमारा फॉर्मेट है उसमें डेरिवेशन का रोल 0 हो गया है। आज जो हमारा फॉर्मेट है, बोर्ड हो या कंपटीशन का तो पहले से ही, लेकिन आज जो हमारा बोर्ड का फॉर्मेट भी है उसमें भी डेरिवेशन का रोल 0 है ना। डेरिवेशन टाइप का जो क्वेश्चन है वो आईटी एडवांस में आते हैं, लेकिन मेंस तक तो कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अच्छा से अगर कोई एनसीईआरटी क्लियर करेगा ना, अच्छा से अगर कोई एनसीईआरटी क्लियर करेगा, आज का जो टाइम है, आज का टाइम है ये कि अच्छा से जो एनसीईआरटी क्लियर करेगा उसका कंपटीशन कंफर्म होगा, क्लियर कंफर्म क्लियर होगा। रैंक चाहे जो भी हो आई डोंट नो, लेकिन क्लियर होगा। कॉलेजेस मिलेंगे, अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छे एनआईटी मिलेंगे। अगर एनसीईआरटी अच्छा से क्लियर है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि रैंक कितना अच्छा आएगा, टॉप 100 में आ जाएंगे, क्या ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा रैंक तो जरूर मिल जाएगा जो एनआईटी में एडमिशन दिलवा। जैसे एनआईटी राउरकेला होम स्टेट रिजर्वेशन के कारण तुम लोगों के लिए बहुत सॉफ्ट हो जाए। चलो, और नीट वाले तो एनसीईआरटी
उनके लिए सफिशिएंट है ही, कंफर्म सफिशिएंट। चलो तो अब मिटाते हैं। हम लोगों ने अभी जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन किया, सिमिलर प्रोसेस से अब हम एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी क्वेश्चन करेंगे। और ये तुम लोग करो, मैं क्वेश्चन तुम लोग करोगे क्योंकि तुम लोग कर सकते हो। जैसे वेलोसिटी का क्या वैसे ही क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी है 4 kg का, इसको अपवर्ड एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड। एक और बॉडी है 3 kg का, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है 2 या हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड। और एक और बॉडी है जिसका मास है 5 और हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड या 3 मीटर पर सेकंड। ओके, ये 3 बॉडी है। फाइंड ACM, फाइंड ACM, फाइंड ACM। फाइंड ACM। किसी को कोई डाउट है? अच्छे से करो, आराम से करो, तुम कर पाओगे मुझे लगता है। अमित प्रेजेंट है? अमित, अमित एब्सेंट है। चलो, सुधांशु प्रेजेंट है? सुधांशु? यस सर। ओके, भागवत तो प्रेजेंट होगा। यस सर। ओके, चलो तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बहुत लोगों का आंसर आया होगा बट मैं भी कैलकुलेट कर देता हूँ। सबसे पहले अलोंग एक्स वाला कैलकुलेट करो। तो अगर हम 4 लेंगे तो इसका अलोंग एक्स में कुछ भी नहीं है, तो 0 पुट करेंगे क्योंकि इसका जो भी पार्ट है एक्सीलरेशन का वो वर्टिकली अपवर्ड है। मतलब अलोंग वाई कर सकते हैं लेकिन एक्स में कुछ नहीं। और अगर 3 का लेते हैं तो ये 4 प्लस ये 5 kg बॉडी अगर लेते हैं तो इसका अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब अलोंग एक्स एक्सिस क्या है इसका 3 cos 37 डिग्री अपॉन मास इज 4 प्लस 3 प्लस 5। कैलकुलेशन कर लो इसको, तो 4 into 0 0 12 प्लस 5 into 3 cos 37 is 4/9। 5 5 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 24/12 इक्वल टू 2। ये आया हमें, बोलो अलोंग एक्स। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका अलोंग एक्स में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और अलोंग वाई में क्या है वो देख लेते हैं। अलोंग वाई में क्या है, ACM अलोंग वाई में लेंगे तो 4 into 2 3 into 0 क्योंकि 3 वाले का अलोंग वाई कुछ भी नहीं है, जो भी है वो अलोंग एक्स है। एंड 5 वाले का क्या है अलोंग वाई, तो 3 sin 37 डिग्री अपॉन 12 4 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू
8 प्लस 0, 3 into 0 तो 0, प्लस 5 into 3 into sin 37 होता है 3/5 अपॉन 12। ये 5 कैंसिल, तो आ गया 70/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो No, सर। sir. No, sir. So this is ACM along y-axis 17/12. ACM along x-axis is 2 meter per second square. तो A along x और along y है, हमको नेट ACM फाइंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइंड करना है ACM, ये नहीं बोल रहा है कि along x की along y, तो हमको नेट ACM फाइंड करना होगा। ओके, तो अलॉन्ग ACM फाइंड करना है हमको। ACM, तो ACM फाइंड करना है तो ACM x स्क्वायर प्लस ACM y स्क्वायर अंडर। तो ACM x स्क्वायर 2 है और एक कितना है 17/12 स्क्वायर अंडर रूट, और आगे का कैलकुलेशन सभी लोग कर सकते हैं। ओके, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट नोट करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट नोट करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताऊंगा। लिखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है वो लिखेंगे। इफ एक्सटर्नल, एक स्टार पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब मतलब अभी तक जो भी पढ़े हैं उस एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर, यही एक थोड़ा टिपिकल है। तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, if external force on the system, if external force on the system is equal to 0, if external force on the system is equal to 0, then acceleration of center of mass is 0. Then acceleration of center of mass is 0. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऐसा कहता है, पढ़ाया है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ, वहां भी ऐसा हमने बात बोला है। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, देन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0. एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0. दैट इज इफ एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। If external force is equal to 0, then acceleration, किसका acceleration? Center of mass का क्या होगा? 0. ये बातें हमने बताया, ठीक है, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0। दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसका जब हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में तो काफी टफ होता है। ये तुम लोग ऑलरेडी एक बार देख भी चुके कि टफ होता था। ओके, तो इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, देन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ये दो कॉलम बना लो, दो कॉलम बना लो, दो कॉलम में बना रहा हूं। ओके, दो कॉलम में बना रहा हूं।
एक ऐसा पॉइंट बना लेना, एक ऐसा पॉइंट बनाना। हमने क्या बोला कि इफ external force on the system is equal to 0, then ACM, what will be ACM? It is also equal to 0. और जब ACM 0 है तो दो कंडीशन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो कांस्टेंट होगा या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। ऐसे 0 को भी कांस्टेंट कर सकते हैं, बट मैंने नॉन जीरो कांस्टेंट ले लिया। दिस इज नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं तो लिख देता हूँ, ये कांस्टेंट तो है लेकिन ये जो k है वो नॉन जीरो है। मतलब मान लो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, एनी वैल्यू ऑफ नॉन जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो के लिए अलग ही हमने कॉलम बना दिया। ठीक है, बोलो अनामिका, समझ में आ रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन तो 0 होगा सेंटर ऑफ मास का। और जब एक्सीलरेशन 0 होता है तो दो कंडीशन, या तो बॉडी रेस्ट में है, या तो बॉडी रेस्ट में है, या तो सिस्टम रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, या वेलोसिटी कांस्टेंट है। या तो वेलोसिटी 0 है या तो वेलोसिटी कांस्टेंट। 0 है मतलब रेस्ट में है, कांस्टेंट है मतलब 2 मीटर पर सेकंड है तो कंटिन्यू 2 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है तो कंटिन्यू 4 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड है तो कंटिन्यू 8 मीटर पर सेकंड है। ये समझ में आया कि अगर एक्सीलरेशन 0 होता है तो दो कंडीशन, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या तो वेलोसिटी 0। समझ में आ रहा है क्या? बोलो विश्वजीत। जी सर। कंडीशन तो दो ही बनेंगे, जब एक्सीलरेशन कोई बॉडी का 0 होता है तो बॉडी या तो रेस्ट में होता है या तो उसके वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो फिर एक्सीलरेशन हो जाएगा। वेलोसिटी को चेंज नहीं होना है, इसके लिए क्या हो सकता है, या तो बॉडी फिक्स स्पीड से या वेलोसिटी से घूम रहा हो, या बॉडी रुका हुआ। तो यही दो कंडीशन है जब एक्सीलरेशन 0 होता है। ठीक है, अब एक बात और मैं बताता हूं कि अगर ऐसा कंडीशन हुआ, ACM अगर 0 हो गया तो हमने क्या लिखा है, M1A1 प्लस M2A2 बाई M1 प्लस M2, ऐसा हमने लिखा है ACM। ठीक है, ACM को ऐसा लिखा है, ठीक है, ACM को ऐसा लिखा है। तो अगर ACM 0 है, if ACM equal to 0, if ACM equal to 0, if ACM equal to 0, then समझना है तो M1A1 प्लस M2A2 बाई M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा 0। तो M1A1 को F1 भी कह सकते हो क्योंकि मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है, दिस इज F1, तो F1 भी कह सकते हो इसको, या बाद में लिखेंगे F1। M1A1 प्लस M2A2 इज इक्वल टू 0, मींस M1A1 इक्वल टू माइनस ऑफ M2A2। तो एक चीज निकल के आया जब एक्सीलरेशन 0 होगा, मतलब F1 इज इक्वल टू माइनस F2, मतलब दो बॉडी है M1 M2 मास का, तो एक पे फोर्स अगर F1 होगा तो दूसरे पे माइनस F2 होगा। ये हमने देखा, ये निकल के आया, इसको नोट करो। कब? जब ACM 0 होगा। इधर भी वही बात लिख सकते हैं, सेम बात कि M1A1, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 इधर भी है ना, M2A2
बाई M1 प्लस M2 इक्वल टू क्या है 0। देन M1A1 प्लस M2A2 इक्वल टू 0। देन F1 इक्वल टू माइनस F2। नोट करो जल्दी से। मतलब दो बॉडी है, दोनों पे फोर्स है F1 और F2, बट वो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल तो 0 है। एक्सटर्नल 0 है तभी ये सब बात बन रही है। मतलब उस बॉडी पे इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल नहीं। एक्सटर्नल 0 है तभी ये सब बात होल्ड हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे दो बॉडी रखा हुआ है, दो बॉडी, एक का मास M1 एक का मास M2, तो दोनों बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं। M2 M1 पे फोर्स लगा रहा है, मान लो F1, तो M1 भी M2 पे फोर्स लगाएगा। ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस आया है ना। अगर कोई कहेगा कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड तो सेम, मैग्नीट्यूड सेम है। फिर माइनस क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। कोई बोलेगा कि F1 F2 कैसा फोर्स है, तो बोलेंगे इंटरनल, क्योंकि एक्सटर्नल तो 0 है, तभी ये सब बात। ये घर में जाके अच्छे से बैठ के स्टडी करना इसको, कि दोनों बॉडी पे फोर्स है F1 F2, इंटरनल है और क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करें। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ओके, नोट करो अभी, और अभी इसमें हम बात करेंगे, नोट करो। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो अभी तक हमने पढ़ाए हैं, स्टडी करना, अच्छे से इसको देखना। कोई डाउट है तो अगले क्लास में पूछना, है ना। आज हम क्लास यहीं पे बंद कर देंगे आज, क्योंकि अभी इसमें और भी डिटेल जाना है, तो हम बीच में रुक नहीं सकते। तो कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, 10 मिनट्स में फिनिश होगा। फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टॉपिक है, ये स्टार्ट करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टॉपिक है, उस कल से। थैंक यू सर। कल मतलब थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पढ़ाई करना है। थैंक यू सर। थैंक यू। And I'll have to clear out that Jyotiranjan, are you present here? Yes sir.
Okay, that means you had sent message to me that we had doubt on that of fructose, the Puranas form of the fructose, alpha fructose. Okay, and that you had also doubt in that of that is how glucose after condensation make that of that is maltose. You had asked such a question to me. Okay, and if you have doubt in such sense, you just see that. Okay, that Puranas form of that of fructose. Okay, Puranas form of that I am drawing. Puranas form of alpha fructose. Alpha fructose. You just tell me that in Puranas form, that means how many members are present? How many members of carbons are present? 5 members. Five members. Very good. 5 members. So we have to draw like this. Okay, you have to draw like this. Like this. Here is that one C1. Here is that of C2. Here is that of C3. Here is that of C4. Okay, C4. Then what we'll have to do? Then we'll have to arrange. You know that the fructose is C6H12O6. Okay, and I have It told was you not that clear. alpha fructose. On alpha fructose, you remember that on carbon number 1, that hydrogen will be on the top. Okay, hydrogen will be on the top. So that hydrogen, you keep hydrogen as it is alpha fructose. We have keep hydrogen on the top on the carbon number 1. Okay, on carbon number 1. On carbon number 1, you just see that here what we'll have to do, that is CH2OH. CH2OH, and here we'll have to, you see that what we'll have to do here, that here is that of OH and here is that of H. Okay, in that of carbon also, here is that of hydrogen, here is that of OH. Okay, OH, and here you see that, here that is CH2OH and here OH. Okay, OH. You count it. Here is carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6. So C6. Then hydrogen you count 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. So 12. Then oxygen you count 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 oxygen. Okay, that is the alpha fructose. Alpha fructose. In alpha fructose, that hydrogen on carbon number 1, hydrogen will be on top. If it is beta fructose, hydrogen will be on the below and the CH2OH on the top. Okay, so it depends upon the condensation of hydrogen. That means you see that here that hydrogen should be on the top position if it is alpha, or if it is beta, then hydrogen will be on the below. That point you have to remember. It is the Puranas form of alpha fructose. Okay, alpha fructose. Another question that we had asked me, that you see that glucose plus glucose. Okay, if you have to add glucose plus glucose, what we'll have to get? What we'll have to get? We have to get that of maltose. Okay, so glucose is C6H12O6. Another glucose is C6H12O6. After condensation, okay, after condensation, what we'll have to get? We have to get that of maltose. Maltose, that is C6. Okay, C6. Here you see that hydrogen here is 12. Here is C12. Here is carbon will be 12 because 6 carbon. Here is 6 carbon. Okay, 6 carbon, 6 carbon. So 12 carbon after condensation. And here is that, you see that this one is a glucose. This one also a glucose. Okay, glucose. And if glucose will have to get maltose.
maltose plus you have to get water. Okay, water. So you see that in hydrogen, that is 12 hydrogen, here is 12 hydrogen, 12, that is 24 hydrogen, but here will be hydrogen will be 22, because here water, that means 2 atoms hydrogen, you see that H2, here is 22, so 22 2, that is 24, 12, 12, 24. Then what we'll have to get, you see that here oxygen 6, here is 6, 6 is 12, but water has taken 1, so what we'll have to get, that is O is 11. Okay, O is 11. So that is that. So that is about what? That is C6H12O6 glucose plus 6H12O6 another glucose. After condensation will form what? It will form that of C12H22O11. That is called maltose. What it is called? That is called maltose. If you will have to add glucose, then you know that fructose formula also same. Fructose formula, that is molecular formula is also C6H12O6. That is fructose. What it will give? It will give also the same thing. C12H22O11 H2O. But what is that? That is sucrose. Okay, sucrose molecular formula also C12H22O11. Okay. Then after glucose and fructose, if you add to that of galactose, if you add glucose to that of galactose, okay, that is galactose. What you will have to get? You will have to get that of lactose. Okay, lactose. Lactose molecular formula also C12H22O11. Okay, so that is the condensation. What I had given the question, last question. Perhaps I don't have remember that which question number is it. That is, it is that of you can have to, that is C6H12O6 one glucose, another glucose in form of glucose, fructose and galactose. If glucose is added, it will give maltose. If glucose and fructose is added, it will have to give the sucrose. If glucose and galactose is added, then it will have to give that of lactose. Okay, that point you have to remember, that chemical formula is C12H22O11. Okay, that is maltose. So that is the Puranos form of alpha fructose. What I have drawn, you have to draw simultaneously with me, and that means that is that question that I had given. You must have to do it. Okay, students. Now you will have to start with that of a new person, that is protein. Okay, today we'll have to start a new part of that of biomolecule. The biomolecule, today we'll have to start with that of protein. Okay, protein. You know that I had completed that of, we have already completed amino acid, we have completed lipids, we have completed that of carbohydrates, polysaccharides. Today we'll have to finish that of proteins. So biomolecules. So biomolecules, and the part we are going to study that protein. Okay, protein. You students know that protein means what? That is preeminent. Protein means preeminent. Preeminent. That means fast. Okay, it is the fast substance. That is fast substance. You know that life process starts with that of protein. Okay, life process starts with that of protein. Then come to that of DNA, RNA, then life form starts. Okay, so that this is called the preeminent. What do you mean by protein? Protein means preeminent or fast. Okay, it is the fast molecule, it's the fast biomolecules which makes the life possible. So this is the preeminent and the fast. That you have to remember. What do you mean by protein? Protein means preeminent or fast. Okay, that points you have to remember. And another point, students, is that they are next to water. Okay, next to water. Next to water, it is that of it is the most important part of the cells. It is the most important part. Okay, next to that, you know that water constitute that of 80 to 90%, and that in that sense, that means it is also 10 to 15%. Protein constitute 10 to 15%. After water, it is the second largest one. It is the second
largest part of the shell, that is 10 to 15%. What water occupies, after that protein share is 10 to 15%. So after water, it is the then nucleic acid, then we'll have to get that of lipids, then you'll have to get that of carbohydrate, then lipids, then we'll have to get the ions. Okay, that's I have already shown you that is water share is most, then come to that of protein, then come to that of nucleic acid 5 to 7%, then come to that of carbohydrates, then we'll have to get that of lipids, and then we'll have to get that of share of ions. So that is 10 to 15%. So protein shares, and it is another point that they are polypeptides. They are polypeptides. Okay, what they are? They are polypeptides. They are polypeptides. You see that? That means so many amino acids. That means there are so many amino acids. In amino acid, whenever I had discussed about that of amino acid, I have told you that there are 200 to 2000 amino acids. But in protein, only 20 amino acids are required. For protein, for the formation of protein, for the synthesis of protein, only 20 amino acids are required. Okay, only that of 20 amino acids. How many amino acids? Amino acids are required for the synthesis of protein, that is 20 amino acids. Other amino acids are not required for the synthesis of protein. And I had already given you all the 20 proteins which are essential, which are non-essential. Okay, that means which are sulfur related proteins. All everything that I have told you during that of discussion about that of amino acids. So you might have remembered all these things. So you remember that only 20 amino acids are involved in the process of synthesis of a protein. Okay, protein. And the such amino acid, suppose this is amino acid, another amino acid, another amino acid, another amino acid. So always it will make a linear, okay, a straight chain. It will have to make a chain, and this will have to join by that peptide bonds. These are the peptide bonds. Okay, these are the peptide bonds. Peptide bond. That is, peptide bond bind two amino acid together. You see that this is the amino acid, suppose amino acid 1. This is the amino acid 2. This is the amino acid 3. This is the amino acid 4. Like this, if you have to add it, then it will be, that means it will join together. One amino acid will join by another amino acid by that of a peptide bond. One amino acid will join to another amino acid by that of peptide bond. Okay, so peptide bond serves as a linkage in between that of two amino acids. So in protein, we'll have to find that of peptide bond. So polypeptide, that means we'll have to find out the number of peptides. Number of peptides. So suppose anyone will ask you that means what are the number of peptide linkage, or what are the number of peptide bonds in a protein. Suppose amino acid number is 20. Amino acid number, suppose there are 15 amino acid involved in the synthesis of a protein. And how many peptide bonds are required for the formation of such protein? We have to -1. We have to make -1. So number of peptide bonds is equal to number of amino acid -1. That point you have to remember. How many? That peptide bond, number of peptide bonds is equal to amino acid -1. Suppose there are 15 amino acid involved in the preparation of protein. So how many peptide bonds are required for such formation? You have to 15 -1, that will be 14. So there will be 14 amino. So 14 peptide bonds are required. So number of peptide bonds for the preparations, for the synthesis of protein, taking the support of 15 amino acid is 14. Okay, it's 14. That formula you have to remember. Number of peptide bonds is equal to number of amino acid -1. Suppose there are 10 amino acids. Suppose just I am asking to you question.
Suppose there are 10 amino acids are involved in the synthesis of a protein. How many protein bonds are required in that process? 9. 9. Very good. 9. Okay, 9. So that how you have known that? That is number of peptide bonds is equal to number of amino acid minus 1. Okay. Then you will have to know about that of that means they are on branch. You remember that they are not branch. Protein, that is preparation of protein, synthesis of protein is not involved in the process of branch. They are on branch. Okay, that point you have to remember that they are linear on branch chain of amino acid. They are linear and on branch chain of chains of amino acids. Okay, amino acid. They are linear and on branch chain of amino acids. That means protein will be formed that is linear on the linear basis, and there is no branch. They are on branch chains. So linear and on branch chain of amino acid. That point you have to remember. Again, that each protein is a polymer of amino acid. Each protein is a polymer of amino acid. Polymer of amino acids. Okay, each protein is a polymer of amino acid, and that is it is a linear and on branch chain of amino acid, polymer amino acid. So many amino acid, that means within that of 20. Whatever be that is maximum is 20. Minimum is 2, maximum is 20. So 2 amino acid can be involved in the preparation of protein, or maximum to that of 20, not more than of 20, because only 20 amino acids are required for the synthesis of protein. Okay, only. That means another point that you have to remember that a protein is a heteropolymer. That another point is a protein is a heteropolymer. Heteropolymer. Why it is called heteropolymer, not homopolymer? And in that of carbohydrate, I have told you that. Can you tell students that why that is it is called heteropolymer, not homopolymer? Not homopolymer. That is protein is heteropolymer but not homopolymer. That you remember that? Have you any idea? Sir, because the amino Would you- acids which make up the protein are different from each other. Yes, very good. You see that in heteropolymer, what happens that different amino acids are required. Okay, different amino acids are required for the formation, not the similar amino acid, not that of one type of amino acid not required. The different types of amino acid are required for the formation of protein, for synthesis of protein. It is owing to that it is called heteropolymer, not homopolymer. Protein is never homopolymer. That concept should be clear. Protein is always heteropolymer. Okay, that is very important. You have to remember that polymer of amino acid, protein is a polymer of amino acid. Protein is a heteropolymer, not a homopolymer. This is very good answer. And the composed of, and remember that protein is composed of hydrogen, oxygen. Okay, protein is composed of hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. Protein is composed of hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. Okay, protein constitute that of hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. That is very important point you have to remember. It is composed of hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. Okay, protein is composed of hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. That is very important that you have to remember. And the protein molecules are very large, and they have very large molecules. Okay, protein molecules are very large. I have told you that they are in filtrate form or that on the retentate. They can be on the retentate or filtrated. Yes, Sanvi, are you listening to me? Yes, sir, I'm there. Can you tell me that it is protein belongs to that macromolecule or biomolecules?
Yes, Jyotiranjan has said the right answer, that is retented. Okay, retented. Okay, that is retented. I have told you that Aditya, why you are not listening? All students are listening. What is the problems with you? That today that any problems that yes, Aditya saw that retented, that is retented because it is that of a biomacromolecule. Protein is a biomacromolecule. Biomacromolecule. Biomacromolecule, so it is on the retented, not unfiltered, because it has 1000 to 10,000 Daltons. Okay, it is okay. So it is 1000 to 10,000. Okay, just Aditya, you just look at the whiteboards and see whatever I'm writing. If any problems, network problems, so I can solve it, but you should have to look at the whiteboard and see what I'm writing, and you have to try to understand, or in the evening class you ask me. Okay, that biomacromolecule, protein is a biomacromolecule and it is 1000 to 10,000 Dalton. Okay, that is molecular weight. So it is on the retented stage. So they are large molecule. As they are biomacromolecule, macro, so they are large molecule. That concept should be clear. Okay, and then highly complex. They are highly complex. They are highly complex. They are not simple. Molecules are not simple. They are highly complex. Otherwise, if they are not complex, then how you are, that is life is possible. Life can be possible if that proteins are simple. Life is possible only if protein form is complex. Simple form of protein can't exist life. Okay, can't have bare life, can continue life. That continuity of life depends upon that complex nature of protein. That concept should be clear. Okay, that concept should be clear. And it is composed of hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. That concept should be clear. Okay, that about that protein, that introductory part of protein, that introductory part of protein, I have told you that proteins are biomacromolecules because their molecular weight is more than 1000, in between 1000 to 10,000, 1000 to 10,000 Daltons, and protein is composed of hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. Proteins are heteropolymer, not homopolymer, because they are composed of different types of amino acids. So they are heteropolymer, not of same type of amino acids. And they are large molecules and they are complex in nature. Okay, complex in nature. And what is protein? Protein is a polymer of amino acid. Okay, polymer of amino acid, and it is always linear, straight, and don't form any branch. Okay, they are on branch, they are linear, they are on branch. That concept should be clear. That is the introductory part. Now we'll have to know about that of properties. Okay, properties of protein. Now we'll have to know about that of properties of protein. Properties of protein. First, we will have to see that are very large molecule. That is properties. I'm just telling about that of properties. First property are very large molecules. Okay, they are very large molecules. Okay, are very large molecule, then form colloidal solution, and they form what? Always form colloidal solution. Okay, always form that of a colloidal solution. Colloidal solution don't diffuse through cell membrane, and then do not diffuse through the cell membrane, okay, don't diffuse through the cell membrane. They always form, they are very large molecule and they form colloidal solution and don't diffuse through the cell membrane. If they will diffuse in the cell membrane, then existence of life will be at jeopardy. So that they don't diffuse through the cell membrane. Protein never diffuse through the cell membrane. Okay, in cell membrane, I had shown you that. You might have seen that. That means that is phospholipid. I have seen that how the protein joins together. Okay, how the proteins and protein acts as that. So water or that of nutrients coming to that of cytoplasm through that of a protein. So that protein acts in the cell membrane. So don't diffuse through the cell membrane. Okay, that concept should be clear.
that form colloidal solution, protein form colloidal solution and don't diffuse through the cell membrane. Okay, don't diffuse through the cell membrane. Another point are they are amphoteric. What they are? They are amphoteric. They are amphoteric. Why they are called amphoteric? Because they are both basic as well as acidic. Okay, they are basic as well as acidic. That protein are amphoteric. They are why they are amphoteric? Because they are basic. They are basic as well as acidic. Okay, as well as acidic. I had told you that you know that of amino acid. Amino acid are made up of two groups. That is two groups. The main group is that of that is I have told you that one is amino group. Another one is hydroxyl group. Hydroxyl group that is acidic in nature. Amino group that is basic in nature. You know that I have told you that of what I have told you that in that of amino acid I have told you that this is hydrogen, that is COOH. I have told you that that is NH2. I have told you that that is R. That is variable. Okay, so this one is that of acidic in nature. This one is acidic in nature. Acidic in nature. This one is that of basic in nature. Basic in nature. So owing to that of amino acid, both acidic in nature and basic in nature, as protein are made up of amino acid, so they are also basic as well as acidic. Okay, they are also basic as well as acidic. You see that histone protein. Okay, histone protein which constitute 50% of that of chromosome. That is histone protein. Histone protein. That histone protein is basic in nature or acidic in nature, students? That is histone protein is basic or acidic? Sir, basic. Acidic. No, that is histone protein is basic in nature. Okay, histone protein is basic in nature. Histone protein is basic in nature. Okay, basic in nature. So as amino acid are made up of two groups, hydroxyl group and amino group. And hydroxyl group signifies that of acidic nature and amino group signifies that of basic nature. As proteins are made up of amino acid, so they are amphoteric. Okay, proteins are amphoteric. So what properties that you have to remember? Large molecule, very large molecule, colloidal form, colloidal solution, do not diffuse through cell membrane, and amphoteric. These are the properties of that of a protein. Okay, students. Now just I am asking you that is Anamika, are you present today? Anamika, absent. Okay, that you Aditya, are you remembering? Aditya, are you listening to me? Are you remembering what I have told? Yes, sir, but it is some network problems, so that's why. Okay. Mic is not on. Then Jyoti, just tell me that that means that first properties of protein. What is the first property of protein? Sir, Jyoti. proteins are very large molecules. Then Niharika, you just tell me that second property of that protein. That they form a colloidal solution. Yes, they form colloidal solution. Then third one will be told by that of Adhyasa Dubey. Adhyasa Dubey, are you present? Yes, sir. Can you tell me So that these are property of that protein? So these are amphoteric in nature because they are both basic as well as acidic. Oh, okay. Then I'm just telling you that why they are Vishwajit, yes, I am asking to you that Vishwajit, you just tell me that why proteins are amphoteric in nature. Vishwajit? Sir, because they are both basic as well as acidic in nature. Yes, very good. They are both basic as well as acidic. Very good, very good. Okay, that Vishwajit, I'm also asking one by one. I have also planned in my mind that I'll have to ask question to you. Okay,
So that I'm asking everyone, that means whose name is remembering to me, I'm just coming to my mind, I'm asking them. Okay. And don't feel bad that sir is asking to a particular students, not on the other, because whose name are coming to my mind, I'm just asking. Okay, you see that. Then you'll have to know that types of proteins according to the state of their molecules. According to the state of the molecule, that proteins are of two types. Protein are of two types. Fibrous protein, another one is that of a globular protein. One is that of a fibrous protein. Fibrous protein, another one is that of a globular protein. Globular protein. Okay, you see that. On the basis of that, on the basis of state of their molecule, on the basis of the state of their molecule, okay, molecules, on the basis of the state of their molecules, fibrous, that proteins are of two types. One is fibrous protein, another one is globular protein. Fibrous protein and globular protein. Now we'll have to know about that, how polypeptide chains spirally bonded to form fiber. That is polypeptide chains. Peptide chains are spirally bound. Okay, polypeptide chains are spirally bound. Okay, to form fibers. That means they are spirally bounded. That means they are spirally bounded like this. They are spirally bounded. Polypeptide chains are, that means fibrous protein, polypeptide chains are spirally bound or spirally bound or spirally wound to form fibers. Okay, to form fibers. That point you have to remember. And coiled about themselves. And here polypeptide chains are coiled themselves. Here polypeptide chains are coiled themselves. Okay, are coiled themselves. Here polypeptide chains are coiled themselves to form, that is spherical molecule, to form that is spherical molecules. Okay, that point you have to remember. The fibrous protein, that is polypeptide chains are spirally bound or wound to form fibers. Here globular proteins are coiled themselves. They are coiled themselves. Okay, they are coiled themselves to form, that is spherical molecule. So that will be the spherical molecule. Here will be that of spirally. They are spirally bound. Okay, that is spirally bound and they are coiled themselves. So that fibrous protein, one is that of a globular protein. Okay, globular proteins, and have secondary structure. They have all fibrous proteins have secondary structure. Today I'll have to tell you about that of there are four structure of protein. Protein have four structure. One is primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. Okay, you'll have to know about that of that is the latter stage of that of that is portion of protein. So that is secondary structure. That means fibrous protein always forms secondary structure. That point you have to remember. And they always form that of a tertiary structure. Okay, tertiary structure. So fibrous protein always forms that secondary structure. Globular protein always forms that of a tertiary structure. Then another are insoluble in water. Okay, are insoluble. They are insoluble in water. All fibrous proteins are insoluble in water and they are soluble in water. Okay, they are soluble in water. So fibrous protein, you have to remember that polypeptide chains are spirally bound or wound to form fibers. Globular proteins are coiled themselves because they will form, that is sphere-like, that is spherical in forms, are coiled themselves to form spherical molecules. And they are fibrous protein are secondary structure.
that form secondary structure, globular protein form tertiary structure. And fibrous proteins are insoluble in water, whereas globular proteins are soluble in water. Okay, they are soluble in water. And that is collagen. That is collagen in connective tissue, which is the most abundant protein in that abundant protein in the world. That is abundant animal protein in the world. Students, you have to remember that is collagen. Collagen is the most abundant protein in the animal world. Okay, that is most abundant animal protein is collagen. Okay, but Rubisco is the most abundant protein in the biosphere. You have to remember which one is the most abundant protein in the biosphere. That is Rubisco. And which is the most abundant protein in the animal world? That is animal protein. That is collagen. And that Rubisco, that I am just telling you that Rubisco stands for ribulose. Rubisco stands for ribulose. Ribulose. Okay, ribulose. This phosphate. Okay, phosphate. Then that is phosphate. This phosphate carbogylase oxygenase. Oxygenase. Okay. That is Rubisco stands for what? Rubisco stands for ribulose, bisphosphate, carbogylase, oxygenase. That is ribulose. That is ribulose. Then bisphosphate, you have to remember. Then carbogylase, bisphosphate, this one. C stands for carbogylase, O stands for oxygenase. That is, you remember that RU stands for ribulose, B stands for BIS, B stands for bisphosphate, C stands for carbogylase, O stands for oxygenase. This is the most abundant protein in the biosphere. Which one is the most abundant protein in the biosphere? Sir, Rubisco. Rubisco stands for Sir, ribulose. Sir, ribulose, bisphosphate, carbogylase, oxygenase. Yes, very good. That is, you have to remember that Rubisco. RU stands for ribulose. B stands for bisphosphate. C stands for carbogylase. O stands for oxygenase. Ribulose, bisphosphate, carbogylase, oxygenase. And which is the most abundant protein? Ribulose, bisphosphate, S. Jyotiranjan. That is what you have to. That collagen. That is collagen is the most abundant animal protein in the world. Okay, that is the most abundant animal protein is collagen. So collagen example is that of fibrous protein. Fibrous protein example is that of collagen, actin, myosin, then myosin. Okay, actin, myosin, collagen. Then we have to write down that keratin. Okay, keratin that you have to find in our hairs, in nails. Okay, horns of animals. That keratin. These are the example of a fibrous protein: collagen, actin, myosin, keratin. These are the example of a fibrous protein. And about that that is a non-contractile protein. All the non-contractile proteins. Okay, and that means some enzymes. Okay, that is non-contractile protein. That is troponin, tropomyosin, tropomyosin. These are that of example of that is troponin. Okay, troponin. These are that of a globular protein. So fibrous protein and that of a globular protein. On the basis of state of their molecules, proteins are divided into two types. One is that of fibrous protein. Another one is globular protein. Fibrous protein, polypeptide chains are spirally bound.
are all wound to form fibers. In globular proteins, that polypeptide chains are coiled themselves. Polypeptide chains are coiled themselves, coil to form that is spherical molecules. Second point that you have to remember, they are secondary structure. They form secondary structure, whereas globular protein form tertiary structure. Third point, students, you have to remember that they are insoluble in water. Fibrous protein are insoluble in water, whereas globular proteins are soluble in water. Fourth point, you have to remember, example of fibrous proteins are collagen, actin, myosin, and keratin. Whereas globular protein example is that is troponin. Okay, troponin. Then come to that of students according to the constituent. Okay, on the basis of state of their molecule, there are two types. That is fibrous and globular. On the basis of their constituent, they are of three types. Okay, on the basis of their constituent, they are of three types. Now we'll have to know that on the basis of their constituent, how they are of three types. Okay, they are of three types. Now you remember that which one is the most abundant protein in the biosphere? That Achilles panda. Achilles panda present. Achilles. Okay, that Niharika, just tell me that which one is the most abundant protein in the biosphere? Niharika. Rubisco, sir. Rubisco, very good, brilliant. Which one is that of most abundant protein in that of animal? In the animal world? Collagen. Very good, brilliant. Okay, so then come to that according to the shape of molecules, I have told according to the constituent. According to the constituent. According to the constituent. According to the constituent. That means what? How they are constituted. How proteins are constituted. According to the constituents, they are of three types. Okay, that is simple, conjugated, and derived. That is, one is simple. That is simple protein. Another one is, student, that is conjugated protein. Okay, another one is that of derived protein. Derived protein. There are three types: simple protein, conjugated protein, and the derived protein. Are formed of amino acid only. Simple proteins are formed of amino acids only. Only amino acid. They are formed of only amino acid. Because they are simple, they are formed of amino acids only. Okay, they are formed of amino acids only, are formed of protein molecule joined to non-protein. Okay, they are formed of protein molecules along with non-protein ones. Okay, along with non-protein ones, because they are conjugated. So non-protein ones, non-protein groups, that is non-protein ones, that is called prosthetic group. That is called prosthetic group. Okay, so that simple protein, all proteins, that means proteins which are found only amino acids, they are called simple proteins. But proteins which are found of protein molecules along with non-protein groups, that which group? That is prosthetic group. They are called conjugated proteins. This is a conjugation. That means some other products are joined with that of proteins. So that is mixed protein. That is mixed protein. So conjugated proteins are mixed protein. So some protein molecules and non-protein molecules, they are combined together in that of conjugated forms. Okay, and that is they are formed. Derived protein are formed by natural breakdown of proteins. Okay, by natural breakdowns of proteins. That is derived proteins. Because you see that means generally peppers are made up of bamboos or that of straws or grasses. But there are some peppers also
also found that of mixed of other papers. So those are the rejected papers or that of waste papers. They are being what? They are being that scientifically prepared. That means chemically they are also prepared to be a new form of paper. So that type of derived. So derived are formed. How they are formed? By natural breakdown of proteins. If some proteins break, that means if some proteins break, and that means one part of a protein, another part of protein will mix together and form a new protein. That is called derived protein. Okay, and simple proteins are only made of amino acid. Conjugated proteins, protein molecules and non-protein groups, and derived proteins are formed by natural breakdown of protein. That is very important point. Natural breakdown of protein. That is derived proteins. Another point that you have to remember that is albumins, globulins. Okay, that is albumins, globulins, globulins, and examples, sir. Keratin, collagen. So these are the examples of simple protein. Okay, these are the example of that of simple protein, because albumins, globulins, collagen, keratin, they are only made up of that of amino acids. They are only made up of that of amino acid, or it is example. Then if you have to cite the example of that is nucleoprotein, glycoprotein, lipoprotein. Okay, that is nucleoprotein. That is glycoprotein. Okay, nucleoprotein, glycoprotein, lipoproteins. Yeah, that means you see that is nucleic acid protein. That is glucose plus protein. That is lipo. That is lipids plus protein. You see that. That means some are proteinous parts, some are non-proteinous parts. Okay, that nucleic acid plus protein, that is nucleoprotein. Glycon, that is carbohydrate, sugar, that is sugar plus protein, that is glycoprotein. That I have shortly written. Nucleo, you have to understand that it is nucleoprotein. Glyco, I have shortly written, you have to understand that sir has written glycoprotein. And the lipoproteins, that is lipids plus protein. So you see that how protein part as well as non-protein parts are mixed together, form a type of protein. These are called that of conjugated proteins. Okay, conjugated proteins. And another, that means if you have to see that of that is peptones, that is peptones, okay, peptones, that are found in that of in our body. That means in the digestive parts you have that peptones, that is peptoges. These are the derived protein, because they are formed of that of breakdown part of different proteins. Such peptones and peptose, they are derived proteins because they are made up of parts of different proteins, because they are made up of parts of different proteins. So they are derived proteins. So according to the constituents, proteins are of three types. One is simple protein, conjugated protein, derived protein. Okay, as you know that on the that is fibrous protein, and you know that globular protein, and similarly that according to the constituent also proteins are three types: simple protein, conjugated protein, derived protein. And simple protein are made up of only amino acid. Conjugated protein is made up of protein molecules as well as non-protein, that is prosthetic groups. Derived protein is made up of breakdown parts of proteins. Example of simple proteins are, that is example of simple protein, the Shubrat, you just tell me example of that is simple proteins. Why you are saying that you are hiding your face, Shubrat, not telling? Yes, that Adyasa Singh present. Adyasa Singh, are you present? Absent. Okay. That Jyotiranjan, you have already told the answer that of albumins, globulins, collagen, and keratin. And that side the two examples of that of conjugated protein.
two example of conjugated protein. Anyone can tell that? Bishojit, you just tell me that example of two conjugated proteins. Sir, lipoproteins, glycoproteins, nucleoproteins. Yes, phosphoproteins. lipoprotein, glycoproteins. Very good. And that of derived protein, two examples of derived proteins. Yes, Sir, that peptones and derived peptides. protein. I'm just asking about the derived protein. Yes, peptones and peptones. Very good. Sir, That sir. Sanvi has told right answer, that peptones and peptones. Sir. Very good. So that according to the constituents, the proteins are of that is three types. Okay, three types. Then we'll have to know about that function of proteins. Okay, we'll have to know about that functions of proteins. Functions of proteins. Functions of proteins. You write down that that is, you have to write down that serve as building material of cells. That is first point, function. Functions. Serve as building materials. Building materials like that of cement or sand or that of chips. Okay. Serve as building materials of cells, tissues. Okay, cells and tissues. So serve as building materials of cells and tissues, so called as structural components. So proteins are called cells and tissues, so called as structural component. Structural components. Why proteins are called as structural components? Because they serve as building materials of cells and tissue. Going to that region, proteins are called structural components. That point you have to remember. Serve as building materials of cells and tissues, so called as structural component. That is important point you have to remember. And then regulate, that is regulate metabolisms. Proteins regulate metabolisms. Okay, metabolisms. Regulate metabolisms and so-called functional proteins. So what? So-called functional proteins. Functional proteins. So you remember that they are called, why they are called structural proteins? Because they serve as building materials of cells and tissues. Why they are called functional proteins? Because they regulate metabolism in body. Okay, they regulate metabolism in body. Going to that region, they are called functional proteins. They are called functional protein because they regulate metabolism in the body. That is the important point you have to remember. And what they are also, that means transport from important smaller molecules. They transport smaller molecules. Okay, molecules. I have shown you that in that lipids, I had shown you that how this protein transport smaller molecules. I have already in cell membrane I have discussed. So transport smaller molecules. Okay. So transport smaller molecules. And another point is that function as hormones. So another point as functions as hormones. Okay, proteinaceous hormones. Okay, there are so many hormones are proteinaceous in nature. Protein hormones. You can know it gradually. You can know it. Which are that of proteinaceous hormones? So function as hormones. Okay, function as hormones and as well as also that of enzymes. Function as hormones as well as enzymes. You know that most of that of enzymes are proteinaceous, except ribozyme. Ribozyme are non-proteinaceous protein. That students you have to remember. It is very important concept. Except ribozyme. I'm just writing here ribozyme. Okay. That is non-proteinaceous protein. It is not a proteinaceous enzyme. It is a non-proteinaceous enzyme. That is ribozyme. So that is function as hormones and enzymes. Function as hormones and enzymes and fight diseases.
in the body system. Okay, in the body systems. These are that of a high function of that of protein. Okay, high function of that protein. You must have to remember. Okay, I also send note as soon as that class is over. I'll send the notes, and first you should have to write down that for practice. Okay, that practice is very important. Your hand speed will have to be increased to maximum extent if you have to write down. So you have to remember all the 5 functions that what I have. 5 last point is 5 diseases in the body system function as hormones and enzymes. Which one is a non-proteinaceous enzyme? Which one is a non-proteinaceous enzyme? Ribozyme. Very good. Ribozyme. Ribozyme is size 3. Size 3, are you present here? Size 3. Yes, sir. Are you understanding? Yes, sir. Problems you must have to tell. Okay. So that you Yes, see sir. that these are the function of that of proteins. Now students will have to know about that of that is different proteins and their functions. Different proteins and their functions. Okay, you will have to know about the different proteins and their functions. And the afternoon sessions that I will have to finish whatever be the rest part of that of proteins. That is structure of proteins. I will have to finish the primary structure, secondary structure, tertiary structure, and that of quaternary structure. I will have to draw the diagram and will show that which proteins include that of which structure. And then I will have to finish today that very small portions of that of biomolecule, that is nucleic acid. Okay, today, and then I will have a test also. Afternoon session there is a test. I will have to ask you 5 questions. Okay, in this morning session, I will have just ask you only 1 question. You must have to answer it. And that is evening session, I will have to ask you 5 questions. So that you see that different, that is different proteins and their functions. Here you write down that proteins, and here that of functions. Proteins and their functions. You see that first is that of collagen. First you write down that of collagen. Collagen's function is that of intercellular ground substance. Its function is intercellular ground substance. Ground substance. Okay, intercellular ground substance. That is, and then come to that of trypsins, that is enzymes. That is trypsin, that is enzymes. So give a 1 proteinaceous enzyme, that is trypsins. Okay, that you have to remember. Then come to that of third one is that of insulin. So insulin, students, you know that insulin is a proteinaceous hormone. It is a hormone. Okay, that is hormone. Generally for that that is diabetes mellitus, that means one you have to take that of insulin. So insulin is a proteinaceous hormone. Okay, insulin. Then come to that of antibody. Okay, then come to that of antibody. It is protein also function as that of antibody fight infectious agents. What it fight? Fight infectious agents. Infectious agents. Okay, so that so antibodies are that of proteinaceous in nature. Antibody. Okay, that you know that of antibodies, different type of antibodies also present in our body, and they are made up of that of protein. So fight infectious agents. Okay, then come to that of receptor. Okay, that is receptor. Then come to that of receptor. That is receptor also a proteinaceous one. Receptor, and it is sensory reception. What it does? It is sensory reception. Sensory reception. Sensory reception in the sense means that you have to taste, smell. Okay, smell, taste, smell like this. Smell, and that of these are the function of that of sensory reception. Sensory reception, they act as receptor. Receptor in the sense taste, smell like this. Then come to that another one is that it is very important point of that is glucose. Okay, that is glucose. That is glucose. That means you have to remember that one. That is enable glucose transport in cell. What it does? Enables glucose transport in cell. Enables
glucose transport in cell. Okay, that is glutophore. That means generally question asks in it, which of the following protein enables glucose transport in cell? That is glutophore, not gluto 1, 2, 3, 4. That is glutophore. That point you have to remember. That is glutophore. You have to remember that one. Gluto 1, gluto 2, gluto 3. That means don't transport glucose in the cell. Only glutophore transport, that is glucose inside the cell. So enables glucose transport in cell. Which one? That is glutophore. Okay, so these are the proteins and its function. Collagen, intercellular ground substance that you have to remember. The trypsins, that is enzymes. Insulin is hormone. Antibody fight infectious agents. Receptor, that is sensory reception of the taste, smell, etc. And the glutophore that enables glucose transport in the cells. That you have to remember. And today you have finished that one. Up to that proteins and function finished. And in the evening sessions that I will have to finish the structure of protein. So all students must have to attend. Okay, that means if any students will have to absent the online class, then you will be the worst sufferer. Okay, so all students are advised to attend the class regularly and sincerely. It is important time because corona, that means that COVID that is testing you time to time. So you should be careful on your part and attend all classes, physics, chemistry, mathematics, biology, all classes, English, all classes you should have to attend. And you should have to understand. If you have any problems, just like today Jyoti Prakash had sent me message on that of WhatsApp. He had sent me message. I'm very happy on him that the means he has also cleared his doubt. Like you students also, you should have to make communication with me through that of WhatsApp. Any doubt, you should have to send the message. Okay. Then just one question, and because time is on, so I'll just ask only one question, and you have to show on that of that screen. So just you'll have to show your name and answer. Okay, and don't be hurried. Whenever I look at that screen, you'll have to answer. Yesterday that happened that some students had shown earlier, I could not see, and so that there was some sort of problem. So you should have to avoid it today. Only one question I am asking the morning session. If evening session, I will have to ask you 5 questions. Okay. So you have to write down the questions. I'm just writing you, and you have to write down also. Very careful about this. Fastest finger first, which will have to show the answer first. You will have to get the credit 25 marks. Today these are 25 marks. One questions that is carries 25 marks. Okay, that question starts now. That question I'm just writing. Which is the most abundant, okay, which is the most abundant chemical in living organism? In living organisms. Question is that, which is the most abundant chemical in living organisms? No Niharika, wrong answer. No Jyoti, wrong answer. Yes, Vishwajit is the right answer. Okay, Sanvi, no, Sanvi, wrong answer. So Vishwajit is the right answer. Vishwajit got 25 marks. The water, answer will be water. Answer will be water. Okay, answer will be water. Which is the most abundant chemical in living organism? Answer will be water. Okay, water. 72. That Pradyumna Sahu. Yes, let. Any students that show the answer? Any students? Any other students? You all students should have to participate. But those the fastest finger first, those you will have to show the right answer. Yes, that Jyotiranjan, what H2O. Okay, that you have written that. What let you have given the answer. So Vishwajit, are you present? Vishwajit. Yes, sir. Yes, I am present, sir. Thank you very much for giving the answer. Water is the right answer. Okay. Yes, sir. Water is the right answer. So, which is the most abundant chemical in living organism? Answer will be because it constitutes the 70 to 90% in the living organism. So that going to that region, it is that of
The most abundant chemical in living organism, answer will be water. Thank you, students. Thank you. And that in the evening session, you'll have to finish that of protein. Okay, protein and nucleic acid. I have already told you that. Yes, sir. Please send today's class notes. Yes, I'm sending Biswajit. Okay, I'm sending. Okay, then you join that evening class. You must have to join. All students are asked. Yes, sir. They must have to attend the class. Those who are not attending, they must have to. Evening class kata Thank padవచ్చు you. sir? Thank you. Thank you. Thank Thank you. you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Back.